Good morning, students. I am Samir. How are you? I hope you all are fine during this period. Are you not subscribing my channel? So let's start. Today I am going to teach you part 2, chapter number 10, spheres of the earth. The earth is surrounded by a layer of gases up to the approximate height of 850 to 1000 किलोमीटर। पृथ्वी के जो लेयर है पृथ्वी का, वहाँ पे 850 से लेके 1000 किलोमीटर तक का जो एरिया है, वहाँ तक जितने भी गैसेस फैले हुए हैं उसे हम बोलते हैं वातावरण, यानी कि एटमॉस्फेयर। And the layer of the various gases is called atmosphere. The atmosphere cannot be seen with the naked eyes. Various gases, water vapors, dust, particle of asteroids, salt particle and even microorganism insect are mixed with the atmosphere. Atmosphere को हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते हैं। वेरियस गैसेस, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, पार्टिकल ऑफ एस्ट्रॉइड्स, ये सारी चीज़ें जो है वो सब एटमॉस्फेयर में ही मिक्स हो जाती है, मिक्स्ड है। एटमॉस्फेयर इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस एज वेल एज ट्रांसपेरेंट। एटमॉस्फेयर कंप्राइज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मैटर्स। एटमॉस्फेयर में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सारी इन तीनों मैटर्स का इंक्लूड करता है वो। मेजर गैसेस इन एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन एक्सेट्रा। द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस इज dense. Here you can see that how many percentage of gases in atmosphere. Nitrogen 78.3%, oxygen 20.99%, argon 0.94%, carbon dioxide 0.03% and other gases 0.01%. These are the proportion of gases in atmosphere. I am giving you one homework for you. Draw, this is the pie chart. This is the pie chart. You have to draw a bar chart of this ratio of gases in atmosphere in a notebook. As we go above the earth's surface, ratio of most of gases इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीसेस। जैसे ही हम पृथ्वी के ऊपर की तरफ जाते हैं, गैसेस का वो एटमॉस्फेयर में जो प्रोपोर्शन होता है, रेशियो जो होता है, वो कम होने लगता है। सिंस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ हैवी गैस, इट इज़ डेंस इन द लो स्ट्राटा ऑफ द एयर एंड डिक्रीजेस इन अबव द स्ट्राटा। The presence of the carbon dioxide after the height of about 20 kilometers and oxygen after the height of 110 kilometer and nitrogen after the approximate height of 130 kilometer is seen decreasing। यानी कि इतनी हाइट से हमें ये जो गैसेस है वो कम हमें महसूस करने को मिलते हैं। At the high altitudes, there are only light gases like hydrogen and helium. हम जैसे ही ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो हमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस वहाँ पे पाए जाते हैं। Now, have you ever listened about the ozone gas? Ozone gas is a healthier gas. सुबह 4 बजे हम वॉक पे निकलते हैं तो एटमॉस्फेयर में ओजोन का प्रॉपर रेशियो जो होता है वो अच्छा होता है और काफ़ी फ्रेश माना जाता है, जो हमारे शरीर को तंदुरुस्ती देता है।
The ratio of ozone gas in the atmosphere is very less. And what is the importance of ozone gas? The gas absorb ultraviolet rays of the sun and protect the planet from excessive heat of the sun. ओजोन गैस जो है वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायोलेट किरणें जो है वो ओजोन गैस में से पसार होती है और एक्सेसिव हीट जो होती है वो उसके बाहर रहती है और हमें उससे कम हीट मिलती है, उससे हमारा प्लानिट जो है वो सुरक्षित रहता है. This gas mostly prevails in open ground at the time of early morning. In the same way, its ratio is more in air area around the seashore. जहाँ पे समुद्र किनारा होता है वहाँ पे ये गैस ज़्यादा पाई जाती है. That is why people go for morning walks in such places, because ozone is a healthier gas. Now this question I think about for you. Why do mountaineers carry oxygen bottles while climbing a mountain? Think about that. Because as we go higher altitude, the gases percentage of gases will be decreasing. That is why they are taking oxygen bottles while climbing a mountain. Due to the various particles in the atmosphere, sunlight is seen spreading on earth. It does not become dark and bright suddenly. Sky colors are drawn before sunrise and dusk sun after sunset are because of dust particles. The rays are reflected through the dust particles and we get sunlight. Understood? Sound can be heard with the medium of the atmosphere. हम आवाज़ें सुन सकते हैं. That is the because of atmosphere. The waves of the sound and lights are reflected in atmosphere and returns to the earth's surface. So the transmission of the radio and television become possible. Atmosphere है, इसी की वजह से ट्रांसमिशन रेडियो टेलीविज़न हम घर पे देख पाते हैं और इसी की वजह से जो वेव्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. Heavenly objects such as meteorites burned due to the friction of atmosphere and get damaged. Thus atmosphere proves as a natural shield of the earth. Suppose to ask in the exam, which sphere of the earth natural shield of the earth? The answer is atmosphere. Now let's see the fourth sphere of the earth is biosphere, called Jivavaran. The part of the environment like lithosphere, atmosphere and hydrosphere, wherever living being is seen alive, is called biosphere. Let's see one video. In a layer of varnish painted on a globe. Relative to the size of the Earth, that layer mirrors the thinness of the atmosphere. It is made up of layers of gases such as oxygen, carbon dioxide, and ozone, which all support animal and plant life in a variety of ways. For example, ozone protects us from harmful UV radiation, and we need oxygen to support our life systems, just as plants require carbon dioxide to support theirs. The hydrosphere contains all the salt water and fresh water on, under, or above the surface of Earth. Fresh water exists in a fixed amount in a hydrologic cycle. Evaporation, condensation, precipitation, runoff, and groundwater. Saltwater oceans provide an essential service to Earth as the main drivers of weather and as critical sinks
that absorb carbon dioxide from the atmosphere. The biosphere contains all terrestrial ecosystems and may be referred to as the zone of life. It includes all soil, plants, and animals, or what we refer to as biomass. Essentially, wherever organisms survive is part of the biosphere, whether at land, at sea, or in the air. Beneath the biosphere is the lithosphere, including oceanic and continental crust, as well as the geosphere, which is Earth's inner core. Since the Iron Age, the lithosphere has been central to human development, providing ores for metalwork. Today, we mine and drill the lithosphere for fossil fuels such as coal and petroleum to drive modern industry. For example, petroleum has several commercial and industrial uses. We package our food and other goods with plastic, wear nylon clothing, and feed oil not only to our cars, but to our crops in the form of petroleum-derived fertilizers. So, biosphere is comprised of variety of life forms, as you see in the video. These living species include humans, vegetations, and animal life. Living being on the earth surface gets food from biosphere. जितने भी जीव इस पृथ्वी पर है वो अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? बायोस्फीयर यानी जीवावरण से प्राप्त करते हैं. Organisms of biosphere provides variety of foods and raw material to the human world. Thus, existence and substance of the human life is based on biosphere. Now, impact of human activities of biosphere. क्या असर होता है ह्यूमन की क्रियाओं पर? Biosphere is mostly in balanced condition, but when human disturbance disrupt equilibrium of the system, then only many problem arise. जब हम जीवावरण को डिस्टर्ब करते हैं तब ये सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती है. Natural food chain is at risk because development is being done by exploiting the environment. आज कुदरती फूड है जो नेचुरल फूड है वो आज खतरे में है, क्योंकि दिन जैसे जा रहा है मानव जाति विकास कर रही है और विकास करने के अपने खुद के स्वार्थ के लिए वो लोग एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते हैं और उसको नुकसान होता है. दिस कंडीशन इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग एज वेल एज एनवायरनमेंट. और ये मानव जाति के अलावा एनवायरनमेंट को भी ये हार्म करता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.